हेलो। अच्छा पिले आमे बर्तमान आज क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 1B रो एक्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा। क्वेश्चन नंबर अछि जे एफ ए फंक्शन इज r to r रियल नंबर टू रियल नंबर and f of x is greatest integer. F of x is equal to greatest integer that is less than equal to x. So we come to prove injective, surjective, bijective. So we now going to prove what function it is. It is injective, surjective or bijective. So now you know about the greatest integer. You know that is the greatest integer known as. You always know तुमको सदा बेले मन रखा पड़ो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। तेणु ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 तुम्हें पढ़ी पे तुम्हें मन थी कि ना तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर विषय से कहीदे। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन एक्स। सपोज यू सी दैट 1.2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, that means it is vary from 1 to 2. Okay, so that means the greatest integer 1.2 is equal to 1. Okay bile, so that is 1 is less than 1.2. So greatest integer of 2.3, that is equal to, it is vary from 3 to 2. That means its greatest integer is 2. 2.3 is not greatest. 2.3 greatest integer is 2. Suppose you see that 3 greatest integer, 3 is itself integer, so that it is greatest integer is 3. Suppose if you taken minus 2.5, so its greatest integer is varies from minus 2 to minus 3. So minus 2.5 greatest integer is minus 3. Okay, that is the greatest integer. Greatest integer is always less than equal to x. प्रथमे एटा को मन रखिबो, greatest integer is always less than or equal to x. So how आमे केमिति greatest integer सबु जिनस पाइबा मु तुमको शिखेदेली। 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, माइनस 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3। केमती ना 1.2 इज वैरीज फ्रॉम 1 to 2. ओके, तेणु 1 आ 1.2 भितर जी ग्रेटेस्ट, सो नियर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1 बिकॉज 1.2 and 1. So that is between these two. So greatest integer is 1. Tapare you see that 2.3, that is 2.3 and 2. So that nearer greatest integer is 2. If you taken 3, it will be greater than 3. हमारा definition टा प्रथम मन रखिया पे पड़ेगा जे greatest integer definition कौन ना greatest integer always less than equal to x. So 2.3 ର greatest integer 2 कहना जति 3 हम नबा तारी डेफिनेशन टा को से अबोलिश कर जो डेफिनेशन मानी माने। सो याटी एटा रा हमर ग्रेटेस्ट इंटीजर रा डेफिनेशन। किंतु हमें कोन प्रूव करबा? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव प्रूव करबा। अच्छा पिले प्रथम हम देखिबा इंजेक्टिव कथा। अच्छा देखो हमें इंजेक्टिव की नुहे हमें आकु ताकु प्रूव करबा। अच्छा इंजेक्टिव माने 1 फंक्शन, 1 फंक्शन माने each element of set R, that is the real number set, all real number, that is all real number. So each element has unique
that is one and only one codomain. Each domain has only one codomain. अच्छा ताले वन वन फंक्शन हमको वन वन हम प्रूव करे पहले हमको लेट रे अज्यूम करे पे पड़े लेट f of x1 is equal to f of x2. हमको पहले प्रथम f of x1 is equal to f of x2 नवा पे पड़े f of x1 f of x2 नेला परे जदि से हमको x1 is equal to x2 गिवन करा if it give x1 is equal to x2 then हमें बुझिबा the function is a one function. अच्छा, so you see that f of x1 is equal to f of x2. So f of x1 is implies that greatest integer of x1 and is equal to greatest integer of x2. Okay, please. Can f of x1 or function greatest integer of x1 हबो, f of x2 or function greatest integer of x2 हबो. अच्छा, जदि हमें let again you see that now taken now x1 is equal to 2.3, so that is one is a real number and x2 is equal to 2.5, so it is another real number. Then you see that greatest integer of x1 means greatest integer of 2.3. So 2.3 greatest integer of 2.3 means less than or equal to 2. So that is equal to. So now we are going to see the greatest integer of x2. So we see that play x2 is the greatest integer of x2 means greatest integer of 2.5. So 2.5 greatest integer is less than equal to 2.5. So integer है 2.5 to greater smaller है, so that is equal to 2. So you see that जदि हमें x1 रो greatest integer 2 एवं x2 रो greatest integer 2, so we can say f of 2.3 is equal to f of 2.5. कहना 2.5 रो greatest integer 2 एवं 2.5 रो जदि हमें 2.5 को इनपुट करिवा ताले आउटपुट हमर 2 आसीबो. हमें जदि 2.5 को इनपुट नबा ताले तथापि हमर आउटपुट 2 आसीबो. but 2.3 that means x1 is not equal to 2.5. तो हमर सॉल्यूशन लास्ट कंक्लूजन कोन हला 2.3 is not equal to 2.5 because the 2.3 is the greater value, 2.5 is the smaller value. So these jana ka equal hele nahi. So the function is not injective. The function is not injective. ताले function टा injective हेई पारला नाही. अच्छा, एटा सब बुझी पाले पहले. तापर वर्तमान में आसीबा सर्जेक्टिव को. ये फंक्शन टा सर्जेक्टिव कि नुहे बा ऑनटू फंक्शन कहती हां कि नुहे हम ताको प्रूव करिया. अच्छा पहले सर्जेक्टिव प्रूफ पाइका सर्जेक्टिव फंक्शन का कहती ना the range of a function, the range of a function is equal to codomain. जदि range of a function टा पिले हमर codomain समय सेम हैला, so that is known as a surjective function. Range means output. डोमेन रफ डोमेन को हमें इनपुट कले हमें आउटपुट मिलिबो. अच्छा पहले देखो, सो यू सी दैट दिस इज ए रियल नंबर सेट. कहना फंक्शन इज रियल नंबर टू रियल नंबर. फंक्शन हमर वैरी कर रियल नंबर टू रियल नंबर. अच्छा एटी कोन हे परिबो 1 हे परिबो 1.2 हे परिबो -2 हे परिबो
2.6 हो पारिबो 7 हो पारिबो एटी 2.3 हो पारिबो 5.3 हो पारिबो 7 8 हो पारिबो 9.2 हो पारिबो so that is the function f1 real number to real number function real number कहले जो सेट रे नेचुरल नंबर थिबे इंटीजर थिबे होल नंबर थिबे एवं रैशनल नंबर थिबे तेणु रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स बोले रैशनल और इरेशनल को लेकर आम रियल नंबर सेट अच्छा द किंतु बट in greatest integer function the in greatest integer function greatest integer function in greatest integer function each real number taken as input each real number are domain each real number are domain कारण आमे 1 पुट करिबा f of x रे 1.2 पुट करिबा -2 पुट करिबा 2.6 पुट करिबा 7 पुट करिबा so each real number are domain second रे the all range are output all ranges are or output all ranges are or output are integers yes पिले केबे तुमर रेंज टा डेसिमल रे आसीबो नाही कहना आम सब देखिले पे ये जो टेस्ट कराला 1.2 रो 1 2.3 रो 2 3 रो 3 -2.5 रो -3 ये सब जो जेती ग्रेटेस्ट इंटीजर रो ये सब रेंज सो ऑल रेंजेस आर इंटीजर दैट इंप्लाइज रेंज इज नॉट इक्वल टू ranges are not equal to codomain. So the function is not surjective. Function टी पिले surjective हिला नहीं. अच्छा आमे बर्तमान कौन करिया ना बाइजेक्टिव टेस्ट करिया. So bijective means the function is both injective and surjective. Here the function is neither injective nor surjective. Hence, it is not bijective. Okay. So it is proved.